Hello, everyone. Let's start with the concept of citizenship. And citizenship means membership to a political community. Now, when we talk about membership, let's take a little further. Let's talk about our distant past when we were living in jungle as primates. So, it is our journey from primates to Homo sapiens. And in that journey, we can trace one common behavior, that is our social behavior. क्योंकि इसी प्राइमेट सोशल बिहेवियर की वजह से वी हैव सर्वाइव दैट लॉन्ग एंड दैट बिहेवियर इज अबाउट सोशल ग्रुपिंग और यही सोशल ग्रुपिंग जो है वो आज हम देख रहे हैं इन फॉर्म ऑफ नेशंस, इन फॉर्म ऑफ कम्युनिटीज, इन फॉर्म ऑफ villages, towns, cities, regions, etc. तो सोशल ग्रुपिंग जो है वो शुरू से हमारे साथ रही है. And अब उसी social group में, when people faced with the unforeseen circumstances, difficult choices, conflicts, and problem that need to be resolved, तो यहाँ पे various mind they sit together and try to find a solution. And in that endeavor, they write a code of living together, and that code is known as politics, and that's what make a political community. नाउ जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसके अंदर कुछ इंक्लूसिव क्राइटेरिया होंगे, कुछ एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया होंगे. अब वो टाइम एंड अगेन डिफरेंट टाइम्स में, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न टाइम में वो सब क्राइटेरिया सब अलग अलग हैं और उनके बारे में किसी और चैप्टर में बात करेंगे. बट राइट नाउ you know what I am talking about, that there are certain inclusive criteria and certain exclusive criteria. All those inclusive criteria are those that provide certain incentive to join a political community. और यही इसी इंसेंटिव या इन्हीं क्राइटेरिया के साथ we are going to start this concept of citizenship. So, uh, citizenship is a journey from being subjects to becoming citizens, and that needs explanation of the code during three terms: ancient, medieval, and modern. अब ancient time में, when the lives were simple, the political code was simple, and people they were they acted more like subjects. Then during few medieval time, when feudalism was there, people lived in a sandwich situation, living under the burden of both clergy, rich people, aristocracy, and king. But during modern time, this agency was changed. Now people they have been given more right, and down the line from ancient to modern times, there has been a heavy decentralization of authority, and it is the decentralization that acts as the ultimate incentive for citizenship. वरना अगर आप यही कहेंगे, अगर somebody is offering citizenship, some countries offering citizenship and saying you do not have any rights, power is not decentralized, some king is there, and you will be living under him as a subject. That citizenship, that political membership is not lucrative at all. It does not provide any incentive. So, citizenship is the journey from being subjects under kings to becoming citizens under democracy. And it is much more than just holding a passport or exercising the right to vote every 5 years. It is about belonging to a political community wherein you are given rights and duties and you can participate in shaping of collective life. And that's where the decentralization dimension comes in. Then, in the words of political philosopher T.H. Marshall, citizenship is a status that is bestowed, that is given those who are full members of a political community. And all those members, their status are equal with respect to the rights and duties with which the status is endowed. This definition may be complex, but it is as simple as that. Citizenship is a status, an equal status that is given to all its members. So, citizenship is not just a legal status, it is an identity, a responsibility, and a relationship. Now, let's have a look at historical evolution of citizenship.
First, during ancient time, ancient Greece, Athens, citizenship was a prize status limited only to free adult males. So here, citizens, जिनको भी ये right मिला है, they can actively participate in governance and that embodied the spirit of direct democracy. But there were some people who were excluded, such as slaves, women, and foreigners. And during the Roman Empire, citizenship it expanded to include many different people across the empire. But it came to mean more protection under law than direct political participation. So here it has a legal protective dimension under the Roman Empire that many people were given citizenship, but it was about uh, extending the authority of law rather than providing them direct avenue to participate in public process. Now, during the medieval period, with the rise of feudalism, the concept of citizenship declined. So, feudalism is about having a status of pure. Pure, you can be a simple farmer, a tenant farmer, or anybody who is working on another farm. Now, this system, the system of feudalism, it is about providing resources and revenue to the ultimate authority. Now that revenue distribution, let's say ये एक piece of land है, यहाँ पे this piece of land it has been divided into four parts A, B, C, D. अब there is a central authority, a king. अब king खुद जो है he cannot look after all the land, all these lands. तो वो क्या करेगा? He distributed this land among four of its trusted partners or four of his trusted governors. या ट्रस्टेड प्रिंसेस तो यहाँ पे प्रिंसेस जो है उनके पास भी बड़ी अथॉरिटी है लेट्स से अब बी की बात करते हैं अब बी के पास ये जितना भी लैंड है उसने वो उस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दीज फोर पार्ट्स जैसे ई एफ जी एच नाउ ई एफ जी एच है दोज आर इंटरमीडिएट्स नोन एज वेसल्स अब यहाँ पे टू प्रोटेक्ट द स्टेट वेसल्स जो है दे हैव बीन गिवन द ड्यूल अथॉरिटी फर्स्ट जो भी लैंड है उससे रेवेन्यू कलेक्ट करके कीप सम शेयर्स फॉर देम और बाकी जो है वो ऊपर भेज दो टू द प्रिंसेस और प्रिंसेस जो है वो कुछ अपने पास रख के बाकी किंग की ट्रेजरी तो दिस सिस्टम वर्क्स लाइक दैट और फिर उसके बाद वेसल्स जो हैं दे हैव बीन गिवन an extra authority to protect the empire. So they needed to maintain some security, some forces, some horses, some cavalry. और फिर जब war है, कोई external aggression है, कोई threat है, तो उस टाइम पे vessels they provided the king with the security apparatus. But ultimately, with the rise of feudalism, the concept of citizenship declined, and people were subjected under cruel rules under kings, monarchs and feudal lords and they had little political agency. वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ultimate power है it it stayed with the wielder of forces and revenue and अभी तक उसे देख के पता चला है who were the wielders of forces and revenue vassals हैं princes हैं governors and ultimately the monarch king तो लोगों के पास कोई political agency नहीं थी. Then in the modern era, with the rise of American Revolution and French Revolution, the idea of citizenship was born that emphasized concepts like liberty, equality, rights, and protection. Now, meaning and dimensions of citizenship. So it carries multiple layers. First, the legal status. So citizenship, it gives a person a legal identity that is recognized by state. The state here is the authority of that political code जो पहले बात की थी that the code that has been established that negotiated debated and then established by people together so this code can be known by different name constitution कह सकते हैं rule book कह सकते हैं but ultimately you can call it law so citizenship it provides a legal identity that is recognized by law and it provides with
provide people with rights such as the right to vote, to own property, to seek justice, and many such rights, जो fundamental rights मिले हैं. And rights and duties, so all citizens enjoy civil, political, and social rights, but they also fulfill certain duties like paying taxes, respecting laws, abiding laws, and serving the community. Now, the third dimension, participation. So, true citizenship, it demands active participation, which means voting, engaging in public debate, joining civil society, or even protesting injustice. And without this due participation, any such citizenship, it can turn into dictatorship or even cruel tyranny of monarchy. मतलब अगर हम लोगों ने we do not uh, keep strict vigil over the authority of state, then we can be incarcerated, we can um, we can be pushed into dictatorship or any such authoritarianism. And the fourth dimension is about identity and belonging. So citizenship shapes who we are. It gives us an identity and how we see ourselves in relation to others. So that's that perception. It creates a sense of belonging to a nation, to a political community, or even global community. So in short, citizenship, it gives us an identity, a marker that we can recognize with. Now, the types of citizenship. So as society and politics evolve, scholars distinguish between different types of citizenship. First one is civic citizenship, that is rooted in rule of law. Here, citizens are equal before law and they are protected by it. Example, right to free speech, right to property. Then there is political citizenship that is linked to political participation, wherein citizens have the right to vote, to contest election, to hold public office, and to influence government. That example, universal adult suffrage in India means adult voting rights. Then social citizenship, it focuses on the right to a minimum standard of welfare and economic security. So in example, right to education, healthcare under welfare schemes, so various infrastructure and welfare programs all come under social citizenship. And then comes the global citizenship, which is an emerging concept where individuals they see themselves as a part of a global community with rights and responsibility towards humanity at large. And it has become um, uh, a form of activism recently because right now we are being infested, we are being troubled by many ills that infest the global commons. Global commons such as the climate that is common for everyone. Climate तो particular nation के लिए particular culture के लिए अलग नहीं है, सबके लिए same है. Then all the common resources such as the ozone layer, Antarctica, space, water, oceans. तो यहाँ पे भी जो global commons हैं, they need protection and they need call of action. तो इसी की वजह से people they building a cohesive global identity. Example, climate activism by youth across world like Greta Thunberg, Pride of a Future जो है. Now the theories of citizenship, here first thinker T.H. Marshall who contributed by describing the evolution of citizenship in three stages. First, civil citizenship during 18th century, political during 19th century, and social during 20th century. One more thing you must keep in your mind, जो चार टाइप्स बताए हैं, तो ये चारों जो हैं ये अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल नहीं है. These are type of citizenship or type of incentives that are being provided. और यूजुअली मॉडर्न डेमोक्रेसी जितनी भी हैं उनके अंदर ये चारों के चारों चीजें प्रोवाइड की जाती है. रिसेंटली जो लास्ट वाला जो है इट इज एन emerging concept. Other than that, जो तीसरी तीन जो हैं, civic, political, and social, these amenities, these incentives are provided to the members of most of the modern democracies. फिर Hannah Arendt की बात करते हैं. She highlighted that citizenship is the right to have rights.
So without citizenship, people lose the platform from which rights can be claimed. Yes, a good definition. So here, citizenship, a membership to a political community, a legal identity, a cohesive belongingness to a national identity, is also about the right, a claim to have rights. क्योंकि अगर सिटीजनशिप नहीं होगी तो लोग जो हैं कहाँ पे वो अपने राइट्स, भले ही पॉलिटिकल कोड के अंदर, लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स मेंशन है, बट वो राइट्स कहाँ से लेंगे? तो citizenship provides the platform from which rights can be claimed. Then, in the definition of family ka, the definition emphasizes multicultural citizenship that recognize cultural diversity within citizenship. So it is about you know accommodative citizenship, wherein different shades of opinion or different cultures they are accommodated within the political community. Now, in the definition given by Bhiku Parekh, who advocated for inclusive citizenship in multicultural society, which is similar to the definition given by Will Kemleka. Now, the status of citizenship in India. So, the citizenship were provided under Part 2 from Article 5 to 12 of Indian Constitution that deals with citizenship. A key principle, single citizenship. Here, इंडिया प्रोवाइड ओनली वन सिटीजनशिप. जैसे यूएसए के अंदर है जो स्टेट्स की सिटीजनशिप अलग है और फेडरल सिटीजनशिप अलग है, लेकिन इंडिया में एक ही सिटीजनशिप फॉर एंटायर कंट्री. देन क्राइटेरिया है सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. तो ये जो क्राइटेरिया है स्पेशली अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955. तो दिस जो ये जो एक्ट है इट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट अंडर पावर गिवन by the constitution. Constitution has empowered parliament to enact such a law. तो उस एक्ट के तहत the parliament it provided certain conditions. तो by birth है ये condition जब constitution was enacted after 1949. तो उस वक्त जो criteria थे कि if a certain person is born in India, so that person is automatically that person automatically becomes a citizen of India. और उस टाइम पे जो क्राइटेरिया थे वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे कि पेरेंट्स जो है वो भी यहीं पे है. जस्ट सॉली प्रिंसिपल कि अगर वो यहीं पे पैदा हुए हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप बन जाएंगे. लेकिन जो उसकी लिमिट जो थी 2004 और 2004 के बाद जितने भी इंडियन पेरेंट्स के जो बच्चे हैं जो यहाँ पैदा हो रहे हैं जो दे ऑटोमेटिकली बिकम्स इंडियन सिटीजन्स. फिर डिसेंट की बात करते हैं. ये होता है कि इफ़ यू आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लेकिन आप कहीं और किसी और टेरिटरी में रह रहे हैं या आप रिसेंटली यू हैव माइग्रेटेड, तो इफ़ you you have descended from any person of Indian origin कि आपके जो ancestors हैं वो यहाँ पे रहते थे, तो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे भी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है. देन रजिस्ट्रेशन दैट यू रजिस्टर फॉर फॉर दिस मेंबरशिप, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं. रिसेंटली वो रिलैक्स कर दिए हैं अप टू 5-6 ईयर्स. पहले वो 11 ईयर्स तक भी थे. Then by naturalization, some foreign person is living in India for an extended time. So ऐसे में that person automatically naturally becomes Indian citizen, like सोनिया गांधी. और उसके अलावा जो alliances हैं like marriage alliance, उसके थ्रू भी natural citizens बन सकते हैं. And finally incorporation of territory. तो अगर इंडिया कोई भी टेरिटरी, कोई फॉरेन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट करती है बाय वॉर, बाय कॉन्क्वेस्ट, बाय एग्रीमेंट, तो उस टेरिटरी में रहने वाले जितने भी लोग हैं दे विल ऑटोमेटिकली बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया. नाउ द रीसेंट इश्यूज. The first issue is about the NRC, National Register of Citizens, in Assam, that raise question about the documentation and identity. तो NRC का इशू ये है that during the Bangladesh Liberation War in 1971, many Bangladeshi they sought refuge in India.
तो उसकी वजह से जो देयर वाज अ लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ illegal migrants into India, or that illegal migration, it stifled with the local demography of adjacent area, क्योंकि आसाम का एरिया है वो वेस्ट बंगाल के पास में ही है। तो ऐसे में fearing that if those illegal migrate, or that large multitude of people, if they become citizens, तो उसकी वजह से the Assamese people they will become minority। तो ऐसे में फिर उन्होंने दे सॉट नो रीलुक एट द सिटीजनशिप एंगल, कि किस किस को सिटीजनशिप दी जा रही है, और जो जितने भी इलीगली यहाँ पे आए हैं उनको ना दी जाए। तो फिर जो रीलुक है to go through all the documentation and identity again, it is known as National Register of Citizens, यानी आसाम के अंदर who were the people who are national citizens, और उनका जो रजिस्टर है, जो एनरोलमेंट है, it is known as NRC। The second issue is about Citizenship Amendment Act of 2019 that generated debate on religion based citizenship। तो जो CAA है, जो it was enacted in 2019, so there are certain controversial criteria that it provided citizenship on the basis of religion, that it excluded Muslim minority from three regions: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ऐसे में जो ये इन जो रिलीजन बेस्ड क्राइटेरिया है, इसके और भी अदर जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है उस पर, तो ये जो है दिस क्राइटेरिया वाज चैलेंज कि दैट under democracy, under especially liberal democracy such as ours, there should be a genuine criteria, a well deliberated criteria। And finally, the recent issue is about dual citizenship, because India does not allow dual citizenship, but it provides ownership citizenship of India, OCI cards, to foreign citizens of Indian origin। तो ऐसे में ये जो पर्सन है, जो पहले NRI कहलाते थे, नॉन रेजिडेंट इंडिया, और अभी उनको PIO बोलते हैं, people of Indian origin। So these people they have provided a backdoor entry to Indian citizenship via OCI। तो ऐसे में ये इनके पास एक फॉरेन सिटीजनशिप भी है, लाइक USA, जर्मन, यूरोपियन, या जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, एक फॉरेन सिटीजनशिप है। एंड देन दे आर प्रोवाइडेड विद some benefits of joining Indian membership, so incentive of Indian membership without the due responsibility, without the due duties। तो ऐसे में ये स्टेटस चैलेंज किया जा रहा है कि यस, दिस ग्राउंड that is solely based on the requirement for investment, it is not a good criteria, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कुछ और इकोनॉमिक क्राइटेरियाज हो सकते हैं, कुछ और इकोनॉमिक टूल्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक फोरथॉट्स हो सकते हैं, बट to provide a backdoor entry like this, it won't be feasible in Indian situation, क्योंकि in that case सिटीजनशिप जैसे बताया, मेंबरशिप टू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, उसमें कुछ ड्यूटीज भी हैं। देन जो डेफिनेशन है गिवन बाय हैना आरन, उसमें ये है कि सिटीजनशिप एंटेल द क्लेम टू हैव राइट्स। Citizenship act as a platform to seek your rights, or it is not just about rights, it is about other things as well। You you claim a lot of things from states and law। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक बैकडोर एंट्री मिल जाती है, तो इन लोग फर्स्ट ड्यूटीज नहीं है, देन दे मे influence the local government or regional or even national government based on investment। तो ऐसे में ये जो लोकल सिटीजन्स हैं उनके राइट्स के साथ कुछ चीज हो सकती है। एनीवे, it is only an emerging issue। Now, the contemporary challenges to citizenship. First such challenge is statelessness, that millions around the world, like Rohingya, the Kurds, the Basque, they live without any citizenship। Then the second challenge is about refugee crisis, that wars and climate change, they are creating newer kind of refugees,
तो वॉर्स जो आप देख रहे हैं चल ही रहा है, एक गाजा में चल रहा है, एक रशिया यूक्रेन में चल रहा है, एंड उसके अलावा सूडान के अंदर चल रहा है, और विद इट कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज भी हैं that are on the horizon, such as the evil of axis, the political term है, that is forming between North Korea, Iran, Palestine, and China. So this may foment instability or persecution in other areas. तो ऐसे में wars, वो तो persecution के कारण refugees create कर ही रहे हैं. Climate change is a new actor here. तो climate change के कारण भी जितने भी lowland areas हैं that are sinking because of rising sea level. Rising sea level का phenomena simple है. Water is a liquid, and most of the earth, around 74%, it is covered with water. और बाकी एरिया जो है, इट इज लैंड. जो जितने भी जो बॉर्डर एरियाज हैं बिटवीन लैंड एंड सी, वो एरिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर इज राइजिंग. कैसे? द फिनोमेना हियर, थर्मल एक्सपेंशन. जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड को आप गर्म करेंगे, वो एक्सपैंड होंगे. तो आप समझ सकते हैं जो कोस्टल एरियाज जितने भी है, लो लैंड एरिया जितने भी है, दे गेटिंग सबमर्ज्ड. और फिर उसके अलावा ये तो एक फिनोमेना है, लाइक मेल्टिंग ग्लेशियर. मेल्टिंग ग्लेशियर की वजह से भी जो डाउन स्ट्रीम रिवर में वाटर जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी सबमर्जेंस हो रहा है बहुत सारे एरियाज का. देन देयर इज एरेटिक रेनफॉल, जैसे इंडिया में, केरला में और वेस्टर्न घाट्स में इस साल, पिछले 2-3 साल से हो रहा है कि बिकॉज ऑफ इरेटिक रेनफॉल बहुत सारे एरियाज जो हैं, या फिर क्लाउड बर्स्ट हो गए जो चमोली के अंदर हुआ था, या फिर जो यूरोपियन नेशन है या अमेरिकाज में देख रहे हैं जो फॉरेस्ट फायर्स हैं. तो इन सब की वजह से जो क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं, दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर. क्लाइमेट रेफ्यूजीज की, उनको जो अपनी पर्टिकुलर टेरिटरी है, दे नीड, दे आर फोर्स टू लीव इट. और वो जगह छोड़ के अब जहाँ भी किसी और जगह पे वेयर दे आर सीकिंग रेफ्यूज, वहाँ पे उनको एग्जिस्टिंग जो लॉज है, एग्जिस्टिंग जो इक्वल स्टेटस है, वो नहीं मिलेगा. एंड देयर इज अ न्यू एलिमेंट अबाउट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. द वर्ल्ड ओवर जो देयर इज राइज ऑफ पॉपुलिज्म. Populism means certain leaders, they claim that they are representing people, but ultimately they start interfering in other institution pillars of law. ऐसे में they keep undermining all the democratic institution. Where to stay in power, they resort to polarization. Polarization means सोसाइटी में जितनी फॉल्ट लाइंस हैं, जितनी डाइवर्सिटी है, उनको वो फिर बड़ा करने की कोशिश करते हैं, दरार को बड़ा करने की कोशिश करते हैं. और उसके लिए द बेस्ट टूल इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. कि पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई, रेस बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, लैंग्वेज या फिर एथनिसिटी या फिर जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स हैं. तो इस पोलराइजेशन की वजह से जो कोहेसिव आइडेंटिटी है, सिंगल आइडेंटिटी, इट इज इट इज बीइंग फ्रैक्चर्ड. Then digital citizenship, the new internet, the rise of social media, the rise of VR, virtual reality, augmented reality, meta, machine learning, AI, all of them, they are creating a new virtual world that is being inhabited by many people. बहुत सारे लोग जो हैं, they are actively existing, they are um, living, they are cohabiting this space along with the real one. ऐसे में this virtual world has become a good part or an inseparable part of present lives. But उसके अंदर the digital world or the virtual world is not being regulated. क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर तो सिटीजनशिप है, लॉ है, पॉलिटिकल कोड है, रेगुलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, इम्प्लीमेंटेशन लॉज हैं, सब हैं.
बट इस डिजिटल डोमेन में या वर्चुअल डोमेन में वी आर स्टेयरिंग एट अ ब्लैक होल. So this internet, it has created a new space of belonging and participation, new cohabitation, but there are also new inequalities, digital divide. तो यहाँ पे मैंने सर्वेलेंस का रेगुलेशन का बताया है. उसके अलावा डिजिटल डिवाइड भी है कि अब जैसे ए आर वी आर की बात करते हैं, ये गैजेट्स जो हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये दे आर वेरी एक्सपेंसिव. और इट इज़ नॉट अबाउट सिंगल गैजेट, इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड. मेटा हो गया, एआई हो गया, एमएल हो गया. तो टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट you should have the required resources, monetary resources, the technological resources. और वो नहीं है. So newer digital divide is seen among the rich and the poor. और साथ में ये जो unregulated virtual space. So both of them, they are creating newer challenges for citizenship. Now the case studies, citizenship in motion. So first, the hybrid or the fluid citizenship of European Union. So citizens of European Union countries, they enjoy dual citizenship, that they are citizens of their home country and the economic and political bloc, European Union. So by which they can live and work across Europe freely. Where the new fluid thing is about India's NRC and CA. So it raised vital question about who belongs and how we define membership of national community. So newer questions are emerging, and फिर question ये भी है कि what should be the ground of inclusion and exclusion. फिर Brexit की बात करते हैं. Brexit means the exit of Britain from the EU. So the UK's decision to leave the European Union, it impacted the citizen status of millions, that is millions of people that lived in Britain and Europe. क्योंकि सिर्फ 50% लोगों ने ही, सर्टेन कह सकते हैं 55% ऐसे, इन लोगों ने ही ब्रेग्जिट के लिए ब्रेग्जिट रेफरेंडम में हाँ किया. यानी यू कैन से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल वर इन फेवर ऑफ लिविंग विद इन द ईयू. तो अब ये जो लोग हैं, जो बिना अपनी मर्जी के, सिर्फ on the basis of a numerical majority, now they need to sever their connection with EU. तो यहाँ पे ब्रेग्जिट भी जो है एक न्यूअर क्वेश्चन है कि ऐसे सिर्फ मेजोरिटी की वजह से, मेजोरिटेरियनिज्म या फिर जो जो प्रेजेंट जो पॉलिटिकल स्टेटस है उसकी वजह से इतने सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, या ऐसे feasible है या नहीं है. Now let's have a look at major debates around citizenship. The first such debate is citizenship versus nationalism. So citizenship is inclusive, that is based on rights and duties, whereas nationalism can be exclusive because it is based on ethnicity. Nationalism has different criteria than citizenship. So in other perspective, we can say citizenship has other criteria of inclusion and exclusion, and nationalism, it has others. So we cannot bring them together, but अगर दोनों overlap होते हैं, so that is good. But otherwise, we cannot create a common ground of one size fits all or putting citizenship and nationalism together. And the second debate is about multiculturalism versus assimilation. तो ये तो आप जानते हैं कि the whole world, it is separated into different geographies, and different geographies mean different cultures. Different cultures means different identities, different ethnicities, different um, political loyalties. And ऐसे में सवाल ये आता है that some democratic country, in order to bring all these voices, all these culture, all these colors together, they maintain an accommodative stance. So that accommodative stance is known as multiculturalism. So now the question is, should those citizens retain distinct identity, different colors, or they should be molten into one national identity? तो यहाँ पे फ्यूजन की बात हो रही है. मल्टीकल्चरलिज्म मीन्स होता है कोएग्जिस्टेंस.
एंड assimilation मतलब होता है फ्यूजन। तो फर्स्ट थिंग, ये चीज तो ध्यान रखनी ही है दैट द वर्ल्ड इट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, डिफरेंट ज्योग्राफी, डिफरेंट कल्चर्स, तो डाइवर्सिटी तो है ही है। देन ग्लोबलाइजेशन की वजह से पीपल आर माइग्रेटिंग, पीपल आर coming together, the borders, the identities, they are becoming fluid। तो ऐसे में कोई भी कंट्री जो है, इसका जो पॉलिटिकल कोड है या जो सिटीजनशिप क्राइटेरिया है, वो कौन सी तरफ जाने चाहिए? शुड दे अलाउ को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वॉइसेस, या फिर दे शुड फ्यूज ऑल दोज वॉइसेस, ऑल दोज डिफरेंट कलर्स इनटू अ सिंगल नेशनल आइडेंटिटी? वैसे असिमिलेशन तो इट कैन बी रूल्ड आउट, बट बहुत सारे जो मॉडर्न पॉपुलस कंट्रीज हैं, दे आर ट्राइंग to weave all people into one identity. But other than that, the coexistence, it is the best way out. Agar there are uh, sufficient uh, resources or sufficient tools for enforcement। फिर बात करते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप वर्सेस नेशनल सोवरेनिटी। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन वी हैव ड्यूटीज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, टुवर्ड्स ग्लोबल कॉमन्स, while remaining loyal to nation state? मतलब ये है कि when the whole village is burning, so should we lock ourselves in our own homes, or should we also address the situation in a group manner, in a united manner? So the answer, we should stand united so that जो global commons हैं, they can be protected। क्योंकि ये आप समझ सकते हैं, if your whole village, if it is burning, so even if you lock yourself in your house, you are not going to live much long। थोड़े टाइम बाद यही आग जो है आपके घर तक भी आएगी। तो ऐसे में we should we should also look after our own homes, और उसके साथ ही we should fulfill our duties towards global commons। कि लोग रहेगा तभी nations रहेंगे। This is it। एंड इन टुडेज वीडियो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे हो जो अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए हो, या फिर समथिंग दैट यू नीड टू आस्क, आप यू कैन ड्रॉप द कमेंट्स। दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।